From an obscure corporator to becoming the youngest mayor of Nagpur to the first BJP chief minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis's climb up the political ladder has been steady as he looks all set to occupy the state's top post for the third time. In a state dominated by Maratha politics and politicians, the 54-year-old leader with deep roots in the RSS is only the second Brahmin after BJP's estranged ally Shiv Sena's Manohar Joshi to become the state's chief minister. आजच्या निकालाने हे स्पष्ट केलंय की संपूर्ण महाराष्ट्र हा नरेंद्र मोदीजींच्या पाठीशी आहे आणि मोदीजींनी जो नारा दिला होता एक है तो सेफ है, महाराष्ट्रातल्या सर्व समाजातल्या लोकांनी एकत्रित येऊन हा नारा यशस्वी केलेला आहे. सगळ्यांनी एकत्रित मतदान केलेलं आहे आणि विशेष आभार आमच्या लाडक्या बहिणींचे देखील आहेत की ज्यांनी आम्हाला खूप आशीर्वाद दिलेला आहे. यासोबत खऱ्या अर्थानं जो फेक नरेटिव्ह तयार करण्यात आला होता त्या फेक नरेटिव्हच्या विरोधात लढणाऱ्या ज्या वेगवेगळ्या संघटना आहेत राष्ट्रीय विचारांच्या त्या संघटनांचा विजय आहे. Son of Jansangh and later BJP leader late Gangadhar Fadnavis, whom his fellow Nagpur politician and former party chief Nitin Gadkari called his political guru, Devendra cut his teeth in politics at a young age when he joined Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, the students' wing of the RSS, in 1989. At 22, he became a corporator in the Nagpur civic body and its youngest mayor in 1997 at the age of 27. Fadnavis contested his first assembly election in 1999 and won. There was no looking back for him as he won the 3 subsequent assembly elections. He currently represents Nagpur South West seat in the House. वैसे तो वो 21 साल का था जब भी 21 साल को होके 6 महीने हुए थे जब भी वो पहले बार कारपोरेटर बना. तो उसका तो पूरा जीवन ही राजनीति से शुरू हुआ और पिछले बार भी वो मुख्यमंत्री बन गया था. अभी इस बार क्या हम आशा रखते हैं कि इस बार भी मुख्यमंत्री बनेगा. जिज्ञासु तो थे, उनके पिताजी की जब मीटिंगें रहती थी तो वो हमेशा हाजिर रहता था वहाँ, सुनता था इनका क्या चल रहा है, उसको बहुत जिज्ञासा रहती. तो पानी देने के बहाने वो उनके सब में मिलता था. 2014 में भी ऐसा समय आया था, अभी फिर वो समय आया हुआ है और बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की. मैं तो स्कूल से उनके साथ में हूँ और अभी भी हमारी दोस्ती वैसी है. Unlike many leaders across the political spectrum in Maharashtra, Fadnavis has remained untainted by accusations of corruption. Among the most articulate Maharashtra politicians, Fadnavis is also credited with pushing the previous Congress-NCP government into a corner over the alleged irrigation scam. Even after a significant loss in the 2024 Lok Sabha elections, he played a pivotal role in shaping the seat-sharing arrangement between the BJP and Shinde's faction. His tenure in the last 2.5 years as Deputy Chief Minister has seen a marked resurgence, and Saturday's results come as the much-awaited cherry on the cake. बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है. As you can see, जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र ने साथ दिया है, उसकी खुशी है. जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने हाथ में हाथ मिला के काम किया है, उसकी खुशी है. बहुत फर्क है क्योंकि लोकसभा में कई फॉल्स नैरेटिव्स बाहर थे लोगों में जो क्लियर हो गए. लाडली बहना लाड़की बहन ने काम कर दिखाया. हमारे खुद के एक स्पिरिट ने काम करके दिखाया, उसका आनंद है. जीत की अपेक्षा तो हमेशा थी. जिस तरीके से पिछले 6 महीने में काम हुआ, जिस तरीके से महाराष्ट्र के हर कोने में जाकर देवेंद्र जी ने मेहनत करी, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया, उनको ये समझाया कि जो सेटबैक हुआ है वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है. अगर हमने थोड़ी सी मेहनत करी तो उस सेटबैक से हम आगे जा सकते हैं. सभी कार्यकर्ताओं की और फैमिली मेंबर्स की तो इच्छा यही है कि देवेंद्र जी फिर एक बार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने.
Though he hails from a politically active family, his father and aunt both served in the Maharashtra Legislative Council, Fadnavis has crafted his own distinct political identity. I'm very happy. Thank you everyone for showing us so much support. It means a lot to us. And keep supporting. We will work for you. And I'm sure that BJP will do whatever it takes to make Maharashtra great. They will decide that. I'm sure whatever the decision is, it will be perfect. Saturday's results of the State Assembly polls, which are overwhelmingly in the BJP's favour, will determine the next phase of Fadnavis's career, which has thus far been defined by resilience, adaptability and strategic insight. In the ever-evolving political environment, Fadnavis's ability to adapt and make tactical decisions could prove crucial for him and his party.